मित्रों, अमेरिकन बिलियनियर जॉर्ज सोरोस ने जो पिछले दिनों बयान दिया कि अडानी की जो एम्पायर इंडिया के अंदर गिर रही है, इसका जवाब मोदी को देना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा और पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना पड़ेगा। और उसने कहा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी रिवाइव हो सकती है। अब इसको लेकर इंडिया में उन पर शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है और बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी आलमी साजिश हो रही है। अच्छा, ये याद रहे कि अगर मोदी साहब और बीजेपी वाले डाउन हुए ना, तो वो खुद सिर्फ डाउन नहीं होंगे, पूरा का पूरा सिस्टम डाउन होगा। ये जब धबरदूस का सिलसिला शुरू होगा तो इसके अंदर गोदी मीडिया के बहुत से चेहरे एक्सपोज होंगे, बहुत सारे मालिकान एक्सपोज होंगे जिन्होंने रिश्वत ले लेकर गुंडागर्दी के नैरेटिव को प्रमोट किया गुज़िश्ता 8 सालों में। और इसके अंदर जजेस एक्सपोज होंगे जिन्होंने रिश्वतें ले लेकर बीजेपी को क्लीन चिट वो देते रहे और उनके गुंडों को क्लीन चिट देते रहे। इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी इंडिया की एक्सपोज होगी जो कि सेक्युलरिज्म से हटके और हिंदुत्ववादी जो तंजीमें हैं उनके जायज नाजायज ऑर्डर्स को वो फॉलो करते रहे। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज होगा। इसके अंदर बहुत सारा यूं समझिए कि गंद जो होगा ना इंडिया के अंदर, जब डेमोक्रेसी आएगी, सेक्युलरिज्म आएगा, तो बहुत सारा गंद इसके अंदर क्लीन होगा। लिहाजा बीजेपी और आरएसएस वाले और उनके सिंपथाइजर्स का जो इस वक्त डर है ना, वो एक समझ में आ सकता है आपको कि वो क्यों डर रहे हैं इतना। अब इंडिया के अंदर जॉर्ज सोरोस को सारी बीजेपी तो क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन मैं जयशंकर को सुन रहा था, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, लेकिन फिर उनको मोदी साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आ गए, उनको नेता बना दिया। और वो खुद कह चुके हैं अगर मोदी नहीं होता तो शायद मैं कभी फॉरेन मिनिस्टर ना बनता। तो उनके ऊपर तो एहसानात हैं मोदी साहब के। उनको मैं सुन रहा था, कल उन्होंने जॉर्ज सोरोस के बारे में बातें की, बुढ़ा भी कहा, उनको खतरनाक भी करार दे दिया कि इस तरह के लोग नैरेटिव बिल्ड करने के लिए रिसोर्सेज भी पंप करते हैं वगैरह वगैरह। अब पहले आप जरा उनकी एक क्लिप सुने। ये जो उन्होंने इल्जामात लगाए जॉर्ज सोरोस पे, उस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। Well, look, I actually made 2 points. One, how the world is changing. It is rebalancing. It is less Euro-Atlantic. I don't think everybody gets that. I think old habits die hard. I mean, very candidly, there are still people in the world who believe that their definition, their preferences, their views must override everything else. So, since you mentioned this specific example, I don't know how familiar people are with what was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. And by the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. Now what globalization does is it actually creates lot of the seamlessness of globalization, which creates all the opportunities, also allows narratives to be shaped, money to come in, foundations to go about their agenda. Now in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. He actually thinks that, I mean, doesn't matter that this is a country of 1.4 billion people, we are almost there, whose voters decide how the country should run. He actually thinks, well, if, and again, I cite him as an extreme example, okay, but there are other, manifestations of this in different countries, where people like him think
an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. This to my and the beauty is all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc. So our generation, we have grown up with concepts like regime change, which influence operations. Now, you can call it what you will. I mean, to me, this really looks the same, with a gloss of some kind of do-goodism on it. So, for me, it's actually necessary today that we have today a serious conversation on democracy. When I look at my own democracy, I mean, I have today a voter turnout which is unprecedented, electoral outcomes which are decisive, electoral processes which are not questioned. We are not one of those countries where after the election somebody goes to arbitrate in court. Okay? We don't have any hanging chads either. And where you actually say, I will sit in judgment over the verdict of voters. Now, my sense of democracy is the voters are supposed to decide. And it worries us because look, we are a country which went through colonialism. We know the dangers of what happens when there is outside interference in whatever guise in your politics. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric, because somebody out there believes you, and you don't leave it to accident, by the way, you back it up with an operation. So you create that kind of fear psychosis, and then you use that to validate your original judgment. So I do think today between whose democracy, whose globalization, why the transparency of how global processes work, these are real issues which need. अब देखें, एक तो इन्होंने बात की जयशंकर ने कि जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि हमारे तरफ इंडिया में लाखों जो लोग होंगे वो स्टेटलेस हो जाएंगे, मोदी सरकार जो है उनको स्टेटलेस कर देगी, वो नहीं हुआ। ये देखें, जयशंकर ने झूठ बोला बेसिकली, और मुझे बड़ा अफसोस है इस लेवल पर पहुंचकर भी मोदी को जस्टिफाई करने में उसको झूठ बोलना पड़ रहा है। फॉरेन मिनिस्टर है लेकिन झूठ बोल रहा है, दिन दहाड़े खुलेआम दनदनाते हुए झूठ बोल रहा है। ये जो इंडिया के अंदर लोगों को, खासतौर पर दलितों को, क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को स्टेटलेस करने का प्रोसेस है, वो तो कब का शुरू हो चुका है। तो जॉर्ज सोरोस ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, उसने कोई गलत बात नहीं की, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जयशंकर ने बड़ा सीधे मुंह के साथ झूठ बोला कि देखें ऐसा तो नहीं हुआ ना, स्टेटलेस तो हमारी तरफ कोई नहीं हुआ। 2019 का अगर अल जजीरा देख लें, आप कह रहे हैं कि इंडिया एक्सक्लूड्स नियरली 2 मिलियन पीपल फ्रॉम आसाम सिटीजन लिस्ट, ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल फेसिंग स्टेटलेसनेस एज आसाम पब्लिशेज कंटेंशियस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो 2 मिलियन तो उधर हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो CANRC है ये ख़त्म तो नहीं हुआ, ये तो कानून पास है, 6 महीने की एक्सटेंशन लेता है अमित शाह, हर 6 महीने के बाद एक्सटेंशन लेता है, उसको टाइम फ्रेम दिया जाता है 6 महीने का कि आप इसके रूल्स फाइनलाइज करें। इसके जब रूल्स फाइनलाइज हो जाएंगे तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 5-6 मरतबा ये एक्सटेंशन ले चुका है, इनसे रूल्स नहीं बन रहे। इनको मसला ये चल रहा है कि बाहर से कहीं नॉन मुस्लिम्स के भेस में, हिंदू बिरादरी के भेस में कहीं एजेंट्स ने घुस के आ जाए दुश्मन के, तो इसको रोकने के लिए वो कोई रूल शूल बना रहे हैं असल में, उसमें इनको डिले हो रही है। अदरवाइज वो जो प्रोसेस है स्टेटलेस करने का लोगों को, वो तो शुरू हो चुका है। डिटेंशन कैंप्स भी बन चुके हैं वहाँ पर आसाम के अंदर। ये उनका पहला झूठ। और इनका दूसरा झूठ ये था कि जॉर्ज सोरोस जो है वो नैरेटिव बनाने के लिए पैसे और रिसोर्सेज जो है वो लगा सकता है, इसलिए डेंजरस है। तो मुझे ये बताएं कि ये नैरेटिव बनाने के लिए उसको पैसे भरने की क्या ज़रूरत पड़ेगी कि बीजेपी और आरएसएस वाले इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट हैं। इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, अमित शाह गुजरात के अंदर अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए थे उसकी रैली में खुद खड़ा होकर कह रहा है कि मित्रों देखें 2002 में कितना सबक सिखाया हमने मुसलमानों को। आपने देखा ना उन्होंने क्या, योगी आदित्यनाथ किस किस्म की बातें करता रहता है। तो ऐसे में जॉर्ज सोरोस क्यों फिर पैसे अपने बर्बाद करेगा, जबकि आपके खुद के जो मिनिस्टर हैं
वो दिन दहाड़े मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ और दलितों और सिखों के खिलाफ बातें करते रहते हैं। तो जॉर्ज सोरोस पैसे क्यों भरेगा? आपके खुद के लोग खुद ही कर रहे हैं, मिनिस्टर लेवल के लोग कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर माहौल ऐसा बना हुआ है कि दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है। अभी हाल ही में देखें बजरंग दल के गुंडों ने क्या किया है, 2 मुसलमान जा रहे थे, उनको जिंदा जला दिया है। अभी 2-4 रोज पहले की बात बता रहा हूँ, जिंदा जला दिया क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि ये बीफ लेकर जा रहे थे। जिंदा जला दिया उनको बजरंग दल के गुंडों ने, दहशतगर्दों ने। तो जॉर्ज सोरोस को परसेप्शन बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए पैसे भरने की जरूरत नहीं। वो नैरेटिव पहले से ही बना हुआ है और आरएसएस बीजेपी वाले खुद ही वो नैरेटिव बना रहे होते हैं क्योंकि ये चीज उनको सूट कर रही होती है, वोट बैंक की जो उनकी पॉलिटिक्स है उसके अंदर। तीसरी उन्होंने बात ये की कि हमारी तरफ इलेक्शंस होते हैं और हमारी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर, हमारी तरफ अपोजिशन भी मान जाती है वगैरह वगैरह। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जयशंकर साहब, ये ईवीएम फ्रॉड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का फ्रॉड क्या होता है? हर इलेक्शंस के अंदर ईवीएम्स के ऊपर सवालात उठते हैं कि नहीं उठते? अपोजिशन वाले बेचारे चीख चीख के खामोश हो जाते हैं। ये और बातें कोई सुनता उनकी है नहीं। ईवीएम का फ्रॉड इंडिया के अंदर होता है, ये सारी दुनिया जानती है। अपोजिशन हर इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर इल्जामात लगा रही होती है, तो फ्रॉड इंडिया के अंदर भी होता है। तो दिन दहाड़ी ये जो 2-3 झूठ बोले मोदी साहब को डिफेंड करने के लिए जयशंकर ने, इस पे मैंने कहा थोड़ा सा इनको आईना दिखाते हैं कि ये जो कुछ भी बात कर रहे थे ना, वो इंडिया के भक्त हजरात तो बाय कर लेंगे लेकिन दुनिया इन चीज़ों को बाय नहीं कर सकती।